हेलो एंड नमस्ते। कृषांक स्पोर्ट्स पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज यश पाठक है एक ऐसे शख्स के साथ जिन्होंने अपने पिता की लेगेसी में क्रिकेट में महारत हासिल करके आज ऐसा बिजनेस खड़ा किया है जो शायद ही कोई सोच सकता था। मेरे साथ है द लेजेंडरी एंड द आइकॉनिक जतिन फरांचपे सर। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना इतना कीमती समय कृषांक स्पोर्ट्स के लिए दिया सर। प्लेजर वेलकम प्लेजर यश प्लेजर। सर। आपके बारे में मैंने बहुत कुछ पढ़ा है एंड मैं आपको बता दूं, मैं सर मुंबई क्रिकेट का एक बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। इंडियन क्रिकेट का तो मैं हूँ ही, हम सब है, लेकिन सर मुंबई क्रिकेट के मैं आज बहुत सारे आपसे डिस्कशन करना चाहता हूँ जनरली अबाउट क्रिकेट। आई वांट टू नो वेयर दिस लव बिगैन, कहाँ से आपने ये सारे अचीवमेंट्स अपने नाम किए, बैटिंग एट नंबर 3 इन दैट स्टार सेट, एवरीथिंग आई एम गोना टॉक अबाउट सर। Yep, yep. तो सर शुरुआत करते हैं आपके क्रिकेटिंग लव से। कहाँ से ये प्यार शुरू हुआ क्रिकेट का? My father was a coach, and growing up I used to see him कि दादा यूनियन के मैचेस के लिए गेटिंग रेडी कि प्रीवियस इवनिंग को बराबर उनके द क्रीम्स जो हम बोलते हैं कि पूरे वो सेट आउट करके किट बराबर एवरीथिंग sorted, and then I would go along with him for the matches as well. So right from the time I think I was maybe in the third or fourth standard, I started going for all Dada Union matches. Or Dada Union was a very professional side. Of course. A very professional side, and when I say professional, I am hinting at the fact that they would plan very rigorously before each match. Thursday evenings were times when the full Dada Union team would be at our house. My mother would make endless cups of tea and some snacks, कि साबुदाना की खिचड़ी और and वो 2-3 घंटे सिर्फ सैटरडे संडे के मैच के बारे में रहता था. एंड लिटरली एवरी बैट्समैन फ्रॉम द ऑपोजिशन कि कहाँ डालेंगे, क्या फील्डिंग होगा, नेक्स्ट बैट्समैन को कहाँ डालेंगे, कौन डालेगा, कौन से एंड से, वो मैच किधर है, विकेट कैसे होगी. Nowadays we talk a lot about analytics, but they were doing all of this at that time. So I think just so much cricketing gravitas was being transmitted to me, that I'm just so lucky, because even today, if you go and talk to any of the Dada Union players, you go and talk to a Jitu Thakre, go and talk to Sanjay Manjrekar, Sridhar Mandle, they will talk about the game at a different level. Absolutely. Different level, because their grounding was through a V.S. Patil, a Sunil Gavaskar, a Vasu Paranspe. The grounding was such. So just coming back to the question, that's how I kind of fell in love with the game. And then I used to also love scoring. So I would go and score for all the Dada Union matches. It's such an underrated थिंग. स्कोरिंग आज के टाइम में लोग बहुत रिपेंट करते हैं, स्कोरिंग दे दिया मुझे. एक्चुअली स्कोर बुक देख के आप मैच के बारे में बहुत कुछ decipher कर सकते हो. It's like an analyst on Wall Street reading a balance sheet. Through the balance sheet he or she will tell you if the company is strong, whether to invest or no. And through a scorebook if you look at like the runs of a batsman, you will know कि that innings will kind of play itself out visually in your head. Absolutely sir. क्योंकि मेरे को इतना स्टैट तो पता है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि दादर यूनियन हैज द रिकॉर्ड सबसे ज़्यादा कांगा लीग ए डिवीजन टाइटल्स उनके नाम है. इनफैक्ट ऐसा टाइम होता था जहाँ पर फिक्स था कि टॉप तो यही जाने वाले, सेकंड थर्ड की लड़ाई थी. एंड ऐसे किस्से so my father was a very democratic captain. Dada Union always had this tradition about strict कि nobody will even smile in the dressing room. ऐसा थोड़ा, when Madhav Mantri was the captain, that was the tradition. And when my father became the captain, the dressing room became a more fun place to be in, wherein youngsters would be given a voice. Milind Rege was one of the players coming up at that time, and my father tells me he would disagree openly with my father in the dressing room that sorry Vasu, this is not the way we should be planning for this game, but everybody had the ability to express themselves. So I think that again was a big kind of takeaway from me,
in terms of how should one work with a team essentially. एब्सोल्युटली सर, लेकिन मैंने ये पढ़ा है कि आप डॉन बॉस्को स्कूल में थे, तो डॉन बॉस्को प्राइमरली जाना जाता है अपने स्पोर्ट्स के कल्चर के लिए. यू टॉक अबाउट द बेस्ट फुटबॉल टीम डॉन बॉस्को, यू टॉक अबाउट बेस्ट हॉकी टीम, एंड आप शायद हॉकी से ताल्लुकात शुरुआत में बिल्कुल बॉस्कोज में, डॉन बॉस्को माटुंगा में हॉकी की बहुत बड़ी ट्रेडिशन थी और अभी भी है. तो एडगर मैस्करेनस, मेरे दोस्त सब ऑल ब्रिलियंट हॉकी प्लेयर्स. सो आई वांटेड टू प्ले हॉकी. I still love hockey. I love hockey. I think अगर आप मुझे पूछोगे तो I am more nervous watching India play hockey than watching India play cricket, because I love the game. I couldn't play it long enough because my love for cricket overtook everything. But Don Bosco Matunga was one of the few schools which had a hockey ground, exclusive hockey ground, and we would practice there all the time. अब तो ग्राउंड्स की कमी हो चुकी है, लेकिन एक आदमी बहुत सारे ऑप्शंस हमें दे रहा है ग्राउंड को लेकर. बिकॉज़ ऑफ यू, विल कम टू दैट लेटर. बट सर, स्पीकिंग ऑफ क्रिकेट एंड योर लव फॉर क्रिकेट, वो क्या मोमेंट था आपके लाइफ में, इफ यू कैन गो बैक एंड थिंक अबाउट कि यार ये मोमेंट पे मैंने डिसाइड किया है, हाँ मुझे क्रिकेट खेलना है. आई डोंट नो वेयर आई एम गोना गेट, बिकॉज नेचुरली आप जब शुरू करते हो सबका सपना होता है टॉप लेवल पे खेलना, आपका भी वही होगा. एंड वो मोमेंट क्या था सर जब आपने डिसाइड किया कि बस अब यही मेरी लाइफ है? एक ऐसा मोमेंट था. एक मैच चल रही थी, दादर यूनियन वर्सेस कर्नाटक एट कर्नाटक. एंड Karnataka, you've played highest standard of club cricket. Always have a good bowling side. Yeah, absolutely. So there was Deepak Rai and young Deepak Rai, and I was scoring. And this was a Kanga League match. और एक collapse हुआ, दादा यूनियन का collapse हुआ, batting collapse. And my father was already in his late 40s probably, early 50s. लेकिन वो खेल रहे थे match. And he would bat at number 7, number 8, just there to kind of guide the youngsters. So collapse hua, and he went out to bat, and he got hit in the face, and you could literally hear the sound of the ball hitting the jaw, and couple of teeth. He lost a couple of teeth, and सब लोग भागे ground पे, and उन्होंने just ऐसे हाथ किया कि कोई आएगा नहीं. And just continued playing, and we won the game. The next ball, actually, after getting hit, he hit a huge sixer to the bowler, and I said, "Boss, ये करना है, life में ये करना है." And that's when I actually fell in love with the game. And I remember his jaw; he had a broken jaw because of that. And we went to my dad's friend, who's an orthopedic surgeon, and we went to his, a clinic, and couple of x-rays, and then he had to wire the jaw actually. So he had to have a procedure done, and then on the way he was still driving the car after that operation. And on the way he just said ki just stop, get me something cold to drink. And we were just sitting around the house, me, my two sisters, my mother and him, and I think I said, "Boss, I want to play cricket." And I heard so many stories about the Mumbai team that so when I said I want to do this, and then I started playing Bombay under 15 and Bombay under 17, and you like, I'm sure you can relate to this, you get soaked in that Mumbai culture. Absolutely. And I always said to myself, यार मैं इंडिया के लिए खेलूँ या ना खेलूँ, लेकिन मुझे बम्बई के लिए तो खेलना है, मुंबई के लिए खेलना है मुझे, जो भी हो. एंड दैट वाज ऑलवेज अ ड्राइवर फॉर मी. सो या इट ऑल स्टार्टेड विद द कल्चर ऑफ दादा यूनियन, द कल्चर ऑफ द मुंबई, ऑफ मुंबई क्रिकेट. इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम देयर. सर ऐसा कहते हैं, मैंने ये पूछा है, बहुत बड़े बड़े खिलाड़ियों को पूछा है, आपसे भी यही पूछता हूँ कि इंडियन टीम में खेलना एक समय पर ऐसा लगता था कि शायद आप इंडियन टीम के लिए खेल लेंगे, लेकिन मुंबई के उस 11 में आना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था सर. तो ऐसा क्या है मुंबई के कल्चर में दैट यू सॉ ग्रोइंग अप? आपने डॉन बॉस्को की बात की, आई एम श्योर अंडर 15 खेले आप, अंडर 17, एंड देन सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो ग्रोथ होती रही आपकी. तो मुंबई की हवा में ऐसा क्या है सर कि 40, 41, 42 टाइटल हमारे नाम है अब, 40+ टाइटल्स, एक ही टीम, बाकी टीम तो मतलब कहते हैं ना कि दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट बट दे डोंट मैच अप टू द लेवल. क्या है ऐसा रीजन हमारे क्रिकेट का? I think
you know, क्लब क्रिकेट इतना स्ट्रॉन्ग है एंड आई थिंक दो तीन चीज़ें हैं. एक तो एक क्रिकेटिंग एबिलिटी एंड दैट इज दैट मैसिव क्रिकेटिंग एबिलिटी कम्स बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग क्लब क्रिकेट कल्चर वेयर आप एज अ यंगस्टर आपको इम्प्रूव करना ही पड़ता है. बिकॉज अगर आप इम्प्रूव नहीं करो तो आप बाहर जाओगे वो टीम में से. सो वो एक इम्प्रूवमेंट का कर्व होता है. तो ये स्किल की बात है. दूसरी है एक कल्चर की बात. और कल्चर ऐसा वर्ड है कि आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते. लेकिन आप जब भी कल्चर होता है आप पहचानते हो कि यस ये टीम में कल्चर है. जब भी नहीं होता है आप पहचान सकते हो यार ये टीम में कल्चर नहीं है. लेकिन यू कैंट पुट अ हैंड फिंगर ऑन इट एंड से दैट दिस इज कल्चर और दिस इज नॉट कल्चर. सो आई थिंक द वे यू लिव एज अ टीम. तो हमारे ड्रेसिंग रूम में सिर्फ क्रिकेट की बातें होती थी. तो जब भी मैच फिक्सिंग का जब भी पूरा वो बबल बर्स्ट हुआ तभी हमें कुछ नहीं मालूम था. Absolutely. बाकी के टीम्स को सब मालूम था कि क्या चल रहा है, कौन इन्वॉल्व है, ये वो. लेकिन हमें कुछ नहीं मालूम था बिकॉज हमने कभी उसके बारे में बात ही नहीं की. सचिन तेंदुलकर हमारा कैप्टन था, उसने कभी इसके बारे में बात ही नहीं की. सिर्फ बात थी कि अभी क्या करना है, मैच की क्या पोजीशन है, प्रैक्टिस में क्या करना है, कहाँ इम्प्रूव करना है, इसके बाद किसके अगेंस्ट खेलना है, यही बात थी. सो एक कल्चर था. और थर्ड जो मैं बोलूँगा कि एक देयर इज़ अ वे ऑफ प्लेइंग द गेम. और वो हमारा बहुत एक अंडर सचिन वो बहुत एक अटैकिंग साइड थी. मुंबई टीम वॉज अ वेरी अटैकिंग टीम. और सचिन का एक सिंपल लॉजिक था कि हमारे पास सलील अंकोला है, एबी कुरुविला है, पारस मामरे है, अजीत केमलेटर, संतोष सक्सेना था, मनीष पटेल, बंटी महाडिक, विशाल महाडिक, अनदर सुपर बॉलर. एंड ही सेड यार अपने पास 7 या 8 इतने अच्छे फास्ट बॉलर्स है तो हम विकेट ग्रीन टॉप रखेंगे और थोड़ा 30-40% हम टॉस हारेंगे, वील गेट पुट इन, लेकिन वील प्ले टू आवर स्ट्रेंथ्स एंड आवर स्ट्रेंथ इज फास्ट बॉलिंग. सो दैट बिकेम अ थिंग कि ठीक है यार देख लेंगे क्या होता है लेकिन अटैकिंग खेलेंगे. सो आई थिंक वो एक कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द थ्री, द टफ क्लब क्रिकेट, the vibe, the culture within the team, and the way that vibe connected into an on-field approach. I think these were the things which made Mumbai cricket during the 90s there was no team to touch us honestly. क्योंकि मैं देखता हूँ, मैं जब भी पीछे जाकर स्कोर कार्ड्स देखता हूँ तो ऑब्वियसली यू यूज्ड टू बैट एट नंबर 3, ओपनिंग स्लॉट, देन नंबर 3. ये सबसे आपके टीम की जो कहते हैं ना बैकबोन होती है, आपकी टीम की बेस होती है और आप उस पोजीशन पे बैटिंग करते थे. मैं ये आपको क्रेडिट देना चाहता हूँ सर, ज़्यादा लोग देंगे या ना आई डोंट नो, क्योंकि जो टॉप 3 होते हैं ना दे खेल जाते हैं अच्छा, न्यू बॉल को टैकल कर लेते हैं एंड देन 4, 5, 6, 7 दे स्कोर द बल्क ऑफ रन्स. एंड में जो 650-700 रन का सीजन होता है वो 4-5 नंबर से ही आया है इतने सालों में. तो सर हाउ डिफिकल्ट वाज इट? आपने कहा कई बार आप टॉस हारे हैं, ग्रीन टॉप पिच एंड वानखेड़े हम जानते हैं कि बॉल मतलब कहते हैं ना नी रोल के ऊपर ही लगता है ज़्यादातर, एंड नया बॉल खेलना इज नॉट ईजी. बड़े बड़े मैचेस में टीम इंडिया ऑल्सो हैज स्ट्रगल्ड एट वानखेड़े आफ्टर पुटिंग टू बैट फर्स्ट. तो सर कैसे आप प्रिपेयर करते थे सिचुएशंस के लिए एंड what was it like when you played in conditions like that? Number 3 was my favorite spot. I always wanted to bat number 3 because Alan Border was a big favorite of mine, and later he batted 5, 6, but there were times when he batted 3. So there was also Graham Wood from Australia who batted 3, and I always thought that and my father also told me that the best position for a left-hander is number 3. And I said हाँ ये इधर ही करनी है मुझे बैटिंग. And like you said, we had challenging wickets, and I remember so many games where I would have batted for an hour and a half, and you get a good one, khachak, and you're back in the hut, and then suddenly next over is lunch, and during lunch 45 minutes of superb sunlight on the pitch, and then lunch to tea, and tea to end of the day's play, somebody is hammering away from your side. Absolutely. So you get used to these situations, and then it made me more determined, ki yaar I don't want to sit inside, I want to be out here enjoying the fun which is going to happen. And we loved playing at the Wankhede because the old stadium had many open areas, so when the tide comes in the evening, the breeze and all was superb. It was I'm getting goosebumps right now speaking. So I loved playing at the Wankhede because you're tired but that sea breeze comes in. ऐसा कहते हैं कि वानखेड़े में पहला 1 घंटा और शाम का 40 मिनट्स का जो सेशन था वो फास्ट बॉलर्स के लिए और हम वैसे ही करते थे. So between lunch and tea, even though first session में हमने 3 या 4 विकेट निकाले,
between lunch and tea, Nilesh would bowl, Sai would bowl, and the opposition would be wondering यार क्या चल रहा है. But हमें मालूम था कि because वो Times of India के front page पे वो high tide, low tide के timings देते थे. तो हमें बराबर मालूम था कि जब भी breeze आएगी तभी SG test ball है. वो थोड़ा reverse होगा या it will start seaming. And Abby would come back into the attack, Paras, and invariably T to end of the day's play और एक 4-5 wicket we would take then. So that was our set strategy. And by the time the opposition understood it, they were already on the plane back home. ढाई दिन में मैच खत्म होते थे सर मुंबई के. मैंने बहुत किस्से ऐसे सुने. बट सर आपने रणजी ट्रॉफी फाइनल 96-97 में अगेंस्ट अ पावर पैक दिल्ली साइड. आई रिमेंबर द बिग नेम्स. आई थिंक निखिल चोपड़ा वाज वन ऑफ देम. अतुल वासन, अजय शर्मा, रमन लांबा sir was there, Ashok Malhotra. That was a plethora of legends in that side. And आपने वहां जाकर नंबर 3 पर एक 100 किया था with Amol sir doing a getting 100 at number 5. तो और वो मैच वाज वेरी हाई स्कोर, यानी 650 हमने बनाए, उन्होंने भी कुछ 600 500 समथिंग. सो फाइनल में जब आप जाते हो, आई एम श्योर कि यू मस्ट हैव बिकम कंडीशनड कि भाई ऐसे सिचुएशन में बहुत बार आया हूं मैं, दिस इज जस्ट अनदर गेम फॉर मी. वाज इट दैट और लगते थे नर्व्स उस टाइम? नहीं, नर्व्स तो था ही, नर्व्स तो वो एक फैक्टर था ही, बट वो थोड़ा एवरीबडी इज लिटिल नर्वस. जो भी बोलता है कि यार मैं नर्वस नहीं हूँ, थोड़ा फेंक रहा है, टू बी ऑनेस्ट विद यू. But you need to, by that time, playing 5 or 6 years for Mumbai, you knew how to channel that, right. Nervousness into positive self-talk and this, that, and the other. And the match was in Gwalior, and it was with the white ball. And Gwalior is a superb track to bat on. And I was just saying to myself, ki 10 minutes, just get settled. And then it's going to be fun. And it was a close match, but वो match का hero था Nilesh Kulkarni. Is it? Absolutely. On the 5th day, 42 overs he bowled non-stop from one end. Over the wicket, into the rough, because we had decided Sanjay Manjrekar का master stroke था. Sanjay, great strategy guy. So we were in a tough spot on day 5. I think Delhi needed about 270 on day 5 with 8 wickets in hand. There was no chance. It was a pata, complete pata. तो खोलने का चांस नहीं था. So we said कि एक एंड ना ब्लॉक करेंगे. And Sanjay said I need somebody to bowl one end up. So Nilesh said I'll bowl. And over the wicket he just came in and bowled. And first, I think Ashu Dani was batting along with Raman Lamba. And first 5-6 overs they thought यार ये कितना टाइम करेंगे. 15 overs we were there only. 20 overs we were there only. लंच तक का सेशन हो गया, we were there only. हमने वो छोड़ा ही नहीं. 5 guys on the 45 backward square leg के इधर mid wicket mid on. छोड़ा ही नहीं. Then they started panicking. और वो पैनिक में एक रन आउट हो गया. तो और एक मिल गया उसके बाद. And that's how we kept chipping away at them, and finally we won the game. So it was a Mumbai team. We never lost hope in any match. We kept fighting till the last ball, and we knew and that's actually a lesson for me in my entrepreneurship career also. That is never over till it's over. You hang in there a little bit longer. I remember somebody told Einstein that you are the most intelligent person in the world. So he said, no, I'm not. But I stay with the problem longer than anybody else. So that to try to solve a problem, you have to have a lot of patience to solve that problem. And I think that patience, that hunger, that self-belief, the Mumbai team had. अगर हम ये करेंगे तो we'll succeed. So it's you'll hear Dhoni talk about it a lot. Ki follow the process and everything. So we had a process. And I think the architect of that process was Sachin, undoubtedly. And so it became a very, very special place to play cricket. It became a very special place. I remember we were playing a game against Australia at CCI, and Shane Warne, sadly no more. Shane Warne and I got talking after the game, and and we had just taken the first innings lead against Australia, so we were very happy. And this was the full Australian team, a full side, boss. Everybody, Wagra, Hayden, Gilly, Steve Waugh, I think Mark Waugh as well.
and full side, but we got the first innings lead. And I remember Shane Warne telling me that Steve Waugh before the match told them that this is a tough unit, so be careful, you know. That's what they used to say. Yeah, that these guys are a tough unit. So that was the reputation of Mumbai in international circles also, and we were all very proud of that. सर ये तो कहते हैं ना कि एक मुंबई करके खून में, व्हेन यू टॉक अबाउट क्रिकेट, आई थिंक हैविंग प्लेड अ लिटिल बिट अराउंड द सर्किट, आई अंडरस्टैंड दैट कितना क्वालिटी में फ़र्क है. जब मैं मुंबई में क्रिकेट खेला हूँ और जैसे ही मैं जाता हूँ किसी और स्टेट में खेलने, नॉट नेमिंग प्लेसेस, बट वेयर एवर यू गो यू ऑलवेज फील दैट आप कंट्रोल में हो सिचुएशन के. सो दैट इज द थिंग दैट सेट्स अस अपार्ट सर. और मुझे भी इतने ऑफर्स मिले कि आप बाहर आके खेलो. चांस ही नहीं बॉस, ये होगा ही नहीं कभी. एक ही कैप पहनूंगा, नहीं एक ही कैप पहनूंगा बस. नो चांस. व्हेन आई stopped relatively earlier because I wanted to kind of get into the business of sport. But even after I said I don't want to play, I'd taken a year off to study for my MBA. But so many calls I got. Big teams. I'm sure, sir. And I said कि नहीं ये नहीं होगा मेरे से. So because उस time पे आप you had freshly played India, you were like a couple of years ही हुए थे India खेले आपको. Yes, हाँ बिल्कुल. Just 2 years, yeah. So I remember 2003 की बात होगी जब आपको. But sir, before that I just want to get to that India call up. क्योंकि सब ये बात करते हैं कि such a magnificent talent, son of a legendary former cricketer, then a coach, everything in your side, and you got that call up. मुझे मोमेंट के बारे में सर थोड़ा आप डिस्क्राइब कीजिए कि आप थे कहाँ पे एंड पहले कौन से वो शख्स थे जिनसे आपने ये शेयर किया. नहीं, एक्चुअली मिलिंद नेब्रेकर करके मेरा बेस्ट फ्रेंड है. ओके. वी नो ईच अदर सिंस वी वर लाइक 5-6 years old. एंड पता था कि ये दिन सिलेक्शन होने वाला है, तो मैं बहुत टेंस था. तो मिलिंद बोला चल यार थोड़ा एक ड्राइव के लिए जाएंगे गाड़ी में, यू नो. एंड just to kill that tension, you know, we were just driving around Parsi Colony, music sun rahe the. And then we got back into our compound and my mother was calling me from up, saying that you're in. Oh God. So what was your dad's reaction? Because I'm sure उन्होंने इतनी मेहनत की होगी जीवन भर. He's given so much to this sport, इतना सारा उन्होंने स्पोर्ट को दिया है. Well, कहते हैं ना कि जब आपको सफलता मिलती है ना तो एक तरह से नहीं मिलती, कहीं और से ही मिलती है. तो उनका शायद अधूरा ख्वाब होगा जो आपने किसी तरह पूछा. What was his reaction? No, he said you deserve to be there, you know. You deserve to be there and just go and play freely. And yeah, so it's a great feeling, you know. I was telling somebody yesterday that I'm lucky that amongst this full population of India, I'm one of the few who has played for the country, but within that subset of that few, I'm one of the few who has hit the winning runs against Pakistan. Yes. You know, so yes, I remember. And then he said, I never thought about that, Jatin. And I said, no, I think about it a lot. So unbeaten innings था आपके इसमें. And yes, you got called up for India. You played your debut against Kenya, and then you played a few matches there, and एक injury हुई थी. जिसकी वजह से. So the next morning after I scored the winning runs, I got injured. So the ankle twist. Yeah, I broke my ankle in a very innocuous way. You know how I sometimes you just twist it and that, and तभी actually इतना अच्छा support staff नहीं था, medical stuff. Or you know, if at that time if we had some physios like you have now, they would have had me up and running in maybe 3-4 months because ligament भी गया था, थोड़ा crack भी था, but it took me about 8 or 9 months to get back. And tab tak I played for Bombay for a couple of seasons, did well also. I think 400-500 runs you still scored. Yeah, but tab tak, you know, Lakshman had come into the team, Rahul had established himself, so that spot went essentially. But yeah, that's the way it goes. You have to move forward come what may. And around 2002-03 ही आपने decide कर लिया था कि now it's enough. You already had gotten married at that time. Yes. And obviously your partner does support you in these things क्योंकि वो आपका एक सपना, आपके partner का भी सपना हो जाता है. That you know, I can understand from your end. And आपने फिर cricket pursue किया and then you took a call कि भाई like you said आपको business करना था, आपका business mind इतना high था और आपने literally वो एक पुरानी कहावत होती है ना कि cricket मतलब he will just स्पोर्ट्स वाला है, इसको क्या बिजनेस समझेगा. लाइक एक होता है ना स्पोर्ट्स पर्सन ही होता है, बट वेरी फ्यू इन द इंडस्ट्री हैव मेड अ मार्क एंड यू आर वन ऑफ देम एंड यू टुक दैट कॉल. क्या रीजन था सर, और आपको ऐसा लगा था कभी जतिन सर कि ठीक है मैं क्रिकेट छोड़ूंगा तो मेरा ये गोल है, ये मेरे से हो जाएगा? एक्चुअली टोरंटो की जो टूर्नामेंट थी सहारा कप, दैट वाज अ आईपी ओन्ड बाय IMG. And IMG's guy in India at that time was Ravi Krishnan, a very dear friend of mine. And I was seeing Ravi, you know, run this entire tournament.
and I thought this is interesting, yaar. इसमें मजा है. जी. And since then Ravi and I are very close friends, but that's when the thought started coming out. Then I started reading. I read a couple of books which made me fall even more into love with sports marketing, and those are two books I recommend for everybody. It's there are two books by Mark McCormack, who was the founder of IMG. He wrote two books. The first one was called What They Don't Teach You at Harvard Business School. Okay. And the second one was called What They Still Don't Teach You at Harvard Business School. So these are absolute Bibles for sports marketing. Anybody interested in sports marketing, you have to go and read word by word, page by page. Even now, I go back to those books to see if I'm missing a trick somewhere. Do you still read a lot? Do you still I do. Yeah. I read, but now audio is the new reading, right? So I listen to a lot of podcasts as well, getting more and more into meditation, spirituality, also learning laterally from other, from other businesses, other categories. So yes, I do read. In fact, I am a guy very, very minimal regrets in life. But one regret I have is that I could not spend any time at all with Piyush Pandey. Of course, the ad guru. So I'd read his autobiography. It's called Pandemonium. Oh. So again, an example of his creativity. So I read it many years back. Then I gifted the book to somebody. So I rebought that book. And now I'm reading up on that again. I was very fortunate to have met him. Just oh wow, you're lucky. I met him at Ogilvy and Mehta. Yeah, O&M. Yeah, he was there. So he's amazing guy, very, very quirky. Yeah. And he had a very dry sense of humor, as a person. But yeah, what a legend. Yeah. And you had the opportunity to meet him as well and be good friends with him, of course. Yes. But so like like I'm saying, I try to read up a lot, and it's good fun. I think you need to be a sponge in life. You need to be on a learning journey all the time, because I think we are as human beings capable of achieving so much more than we end up doing. So I think meditation is very important. Being silent is very important. I think all the answers are inside you. So a lot of self-introspection is needed by not only me, all of us. I think it helps us grow. Absolutely, sir. And just adding to that, I feel that you have also spent a lot of, like a formidable amount of time in the Europe. Yeah. In the European countries, in Netherlands, Yeah. primarily. 3 years you were there. Yeah. You've seen all kinds of sports there, Yeah. especially football. You've closely followed the Eredivisie or maybe La Liga or the Premier League and all. So you followed different sports, and then you took this jump into Nike. Yeah. That was your stepping stone in the journey to become a successful entrepreneur. Something about that, sir. What did you do differently? I was running after I stopped playing cricket. I was running a small consultancy on my own. Just working with brands who want to invest in sport. And out of the blue, I got a call from Nike saying that they've just signed up with the Indian team, and they would like to interview me. So that's how it started. I spent 2 or 3 years in Bangalore as well, because Nike was based there, and unbelievable experience. It's really fortunate to work with them, and just learned, about product, about marketing, about storytelling, about strategic thinking, about finance, about law, you name it. And then Nike gave me an incredible opportunity to go and work in Europe, football sports marketing, working with all the biggest clubs. Manchester United, Arsenal, Inter, What year was it, sir? 2012 to 2015. The peak of मेरे childhood का peak. Correct. And worked with all these clubs, worked with some great players, worked with Cristiano a lot, and just learned a crazy amount. And that's what's helping me now. My question to that, just adding up to it, is what was the difference in the work ethic
अब मैं देखता हूँ इतने सारे स्पोर्ट्स पीपल, हमारे इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है, ऑफ कोर्स बहुत सारे टैलेंट है, आप देख सकते हैं हर स्पोर्ट में हमारे पास टैलेंट है. टॉकिंग अबाउट फुटबॉल अगर Yeah. हम बात करें, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट वो नेचुरली डिफरेंट बिल्ट है हमसे, क्या उनका वर्क एथिक बहुत अलग है हमसे? हाउ हाउ आर दे ऑलवेज सुपीरियर व्हेन यू टॉक अबाउट सम स्पोर्ट्स या फिर? No, I think the youngsters today in cricket also, even Indian youngsters, whichever sport, it could be a gymnast or a high jumper or a runner, they have tremendous work ethic. Tremendous. I think that's the biggest change in India. Right. You know, when we were there, that awareness wasn't there. Even when you were playing, that awareness wasn't there such a lot. But I think Virat has been that one role model for all sports persons. Ki yaar, we can also do this. Neeraj Chopra again, that one role model. So I think the intensity, the focus, the discipline, the wherewithal from a sports science perspective, everything is there today in India. Just that in foreign countries like in football, you get your first technical coaching when you're 4 or 5 years old. Yeah, So exactly. that and we were doing it when we were 10 or 12 years old. Our Correct. first coach would come into our life. Like my Vasant Amladi sir came into my life when I was 10 or 11 years old. But today a coach comes into a cricketer's life when the child is 4 or 5 years old as well, right? So that early learning curve, the earlier understanding of the game is where they were ahead, but that's changing very rapidly in India. I think India over the next 20, 30 years has a huge future in sport. सर बट टॉकिंग अबाउट योर पर्सनल अचीवमेंट्स एंड जो आपने खिताब हासिल किया, यू हैव बिल्ट एन ऑर्गेनाइजेशन, अ स्टार्टअप विच स्टार्टेड एंड एट अ वेरी लाइक बेसिक इस पे, एंड आई एक इंटरव्यू भी आपका मैंने देखा कुछ साल पहले, आई थिंक कोविड के टाइम पे, जहाँ पे आपने कहा था कि वेल मैं ये स्टार्ट किया है, मैं इसे इधर इधर देखना चाहता हूँ. तो पहले तो हाउ डिड यू कम अप विद योर बेबी, ये जो आपका काम था, एंड देन आज मेरे को आपको कहना चाहिए सर कॉन्ग्रेचुलेशंस, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू सिट इन द सेम. मैं बहुत लकी हूँ कि मैं इधर बैठा हूँ, क्योंकि सर आपने ना कि नॉट ओनली आर यू द चोजन वन जिसने इंडिया के लिए क्रिकेट खेला है, बट एट द सेम टाइम आपने मल्टी मिलियन बिजनेस अपने लिए किया है, जिससे बहुत लोगों के लाइफ चेंज हुए हैं, एम्प्लॉयमेंट से लेके सारी चीज़ें. तो सर ये थॉट कहाँ से आया, एंड जो आपने तब कहा था 5 साल पहले, इतना कॉन्फिडेंस कैसे था अपने आप में कि कुछ सालों में ये होगा और बैठेंगे और बात करेंगे? तो आइडिया आई थी booking.com से. ओह यस आई हैव रेड, बिकॉज मैं एम्स्टर्डम में था और मेरे 2-3 दोस्त ऐसे बन गए जो बुकिंग के लिए काम करते थे. और booking.com हैज़ अ डच फाउंडर, एंड मुझे लगा यार ये बहुत कूल है कि एन एग्रीगेशन आइडिया. तो आई सेड ये इंडिया में करना है. और मैं मोदी जी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, एंड ही बिकेम प्राइम मिनिस्टर इन 2014. तो तभी मैंने मेरे वाइफ को बोला कि यार अभी हमें जाना चाहिए, बट वो वर्ल्ड कप था, बिकॉज आई वाज लुकिंग आफ्टर द वर्ल्ड कप फॉर नाइकी इन ब्राज़ील. तो वर्ल्ड कप था, फिर 1 or 2 years later आई लेफ्ट एंड केम ओवर. बट द आइडिया केम फ्रॉम booking.com कि एवरी वेन्यू, एवरी कोच, every community, every event should be on one app. Right. So access should not be a problem. And then I spoke to a few friends about the idea, and I just gone to them just for their feedback on the idea. Opinion. हाँ, और ये 4 or 5 very close friends थे, like family, and everybody said कि amazing है, प्लीज मेरे से पैसे ले ले, प्लीज मुझे डालने दे इसमें, प्लीज प्लीज प्लीज. सो दैट्स हाउ द फर्स्ट एंजल राउंड केम. बट देन क्या हुआ कि बिकॉज आई एम अ नॉन इंजीनियरिंग फाउंडर, आई डिडंट नो एनीथिंग अबाउट प्रोडक्ट डेवलपमेंट. अभी थोड़ा बहुत सीख रहा हूँ, कोडिंग आई डोंट नो. तो थोड़ा फर्स्ट 2-3 years वर अ स्ट्रगल. Because we zigged and we zagged, and investors, we had a big investor, and they said that you've not been able to show any growth, and this, that, and the other. So there was a lot of turmoil in my life at that time, but somewhere that vision was कि aggregation चाहिए, एक aggregation platform चाहिए, and India needs it. I always in a moment of low confidence, I always tell myself कि Jatin yaar, at the end of the day na, the nation needs this platform. So something will work for you,
and something will make this business a success, you know. सर क्योंकि आज के टाइम में मैं अपना फ़ोन ओपन करूं, मैं आपका ऐप ओपन करूं, आपका वेबसाइट पे जाऊं और मुझे जहां भी खेलना है मेरे विसिनिटी में देयर आर एटलीस्ट 3 और 4 लोकेशंस Yes. जो आपके अंडर एटलीस्ट टाइम से Yes. तो कम से कम बिल्कुल. है. यू हैव द अपॉर्चुनिटी ऑफ गेटिंग अ कोच. Yes. आपको अगर कोई कोच चाहिए तो वहाँ ऑप्शन रहता है, ये भी है करके. सो ये जो चीज़ें हो रही हैं ये आपको कहते हैं ना वन स्टॉप शॉप हो जाता है एक तरह से. बिल्कुल. और हाँ, करेक्ट, दैट्स द आइडिया Yeah. कि इंडियाज होम ऑफ स्पोर्ट, you know, that's how we that this Khelomor is your front door into sport. Absolutely. You know, so you open the door and everything's inside. और इनफैक्ट मेरे को लगता है खेलो मोर को देखकर ऐसे बहुत सारे और लोगों ने भी Correct. इंस्पिरेशन लिया Correct. है. और मैं बिंदास मेरे विजन के बारे में बात करता हूँ हाँ. कि यार, बिकॉज आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, आई एम वेरी कंफर्टेबल कि ये मैं करूँगा, ये हाँ. मैंने ही खेलोमोर की टीम करेगी. एंड दिस इज, अभी तो वेन्यूज है ऐप पे, बट नाउ वी विल स्टार्ट लिस्टिंग थाउजेंड्स ऑफ कोचेज ऑन द ऐप, ट्रेनर्स ऑन द ऐप. Right. सो वो भी एक सॉल्व हो जाएगा. एंड ड्यूरिंग द पैंडेमिक वी सॉ द वैल्यू. You know, really it makes me very emotional. But during the pandemic, so before the pandemic, when we used to go to coaches and say कि आप list हो जाओ app पे, they would say कि मुझे नहीं चाहिए. You know, मेरा अच्छा चल रहा है सब, आप क्या value add करोगे? तभी product भी अच्छा नहीं था. तभी ऐसा we didn't have a great tech team like we have now. Kamlesh and Tushar and you know, Gaurav and Vikash and all these guys are superb developers. बट तभी यार कभी कभी ऐप भी ओपन नहीं होता था. सो कोच बोला कि यार तेरा ऐप नहीं चल रहा है बराबर, तो मुझे बोल रहा है कि तू एक्स्ट्रा बिजनेस ला के देगा. बट व्हेन द पैंडेमिक हैपेंड वी हैड टू पिवट, और हमने एक लॉकडाउन में खेलोमोर करके कॉन्सेप्ट चालू किया. Where it was called Lockdown में खेलोमोर. So we started conducting kids fitness classes online. Because the children were at home, and they were just kind of the parents wanted some activity for the children, so we started that. We did ballet classes online. We started teaching the fundamentals of cricket technique, football technique, badminton technique online. Yeah. So we pivoted to an online model, and the coaches who were sitting at home because all the venues were shut were now getting business through us. So Parth Shah, who was looking after that initiative for us, said, Jatin, now phone karo coach ko first ring mein utha dega कि खेलोमोर बोलो आप, you know, what can I do? So that really went into forging a brand for Khelomor in the eyes of the coaches. Right. और अगर आप for a venue or for a coach, if you deliver value to them ना, वो आपको कभी छोड़ के नहीं जाएंगे. So that was a very emotional time for me कि यार ये such a lot of uncertainty in the world, and you know our cash was running out, and it's a costly business, you know, running a tech business, a costly business. So but we could make something out of it at that time. I think आपका इंटेंट भी इतना प्योर था, जैसे मैं आपसे सुन रहा हूँ. एक सेल्फलेस जब आप में भाव होता है ना, और जब किसी के लिए गिविंग भाव होता है, तो somewhere the universe something. And our full team is like this. My co-founder Ujjwal also, you won't meet a nicer guy. And the idea is कि ये तो खेलोमोर का एक जो आप बोल रहे हो कि वन स्टॉप शॉप, ये तो होगा ही, बट एट द बैक एंड वी ऑल्सो वांट टू हैव अ रियली ग्रेट स्किलिंग एग्रीगेशन. So imagine all the certification courses, imagine an academy for sports skilling, and like swimming, everything is here. Everything is here. So that will be the supply chain of all our coaches. We will have venue managers courses, sports, school sports operation people courses. So all of these, like today, gated communities, so many gated communities, and they all have a clubhouse. They do. But you don't have a course for the clubhouse manager. So we are writing those courses right now. So we will be like a complete network of aggregation which is tech enabled, so that Indians everywhere can access sport. सर देखो, ऐसा हमेशा कहते हैं, अभी इस बात से मुझे याद आया, लोग ऐसा बड़ा कहते हैं कि इलेक्शन के टाइम पे एक वो बुकलेट आती है कि मैं रोजगार दूंगा, ये दो. आपने तो सर लिटरली ऐसा क्रिएट कर दिया है. इट्स लाइक इट्स अ लाइफ चेंजिंग काइंड ऑफ अ कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आप पीपल हुआ कोर्ट मैनेजर्स, आज कोर्ट मैनेजर बनने के लिए आपको कोई फॉर्मल डिग्री नहीं चाहिए एमबीए की. करेक्ट. यू कैन जस्ट बी समवन जिसको स्पोर्ट पता हो, जिसको एडमिन का थोड़ा काम पता हो, एग्जैक्टली, और जो प्रेजेंटेबिलिटी सीख जाए. एग्जैक्टली. तो ये बहुत सर अमेजिंग है ये. और and India, अपना population is the youngest population in the world, right? And मुझे बहुत डर लगता है कि always मैं अम्बेडकर कॉलेज का एग्जाम्पल यूज़ करता हूँ कि अम्बेडकर कॉलेज में अगर एक 11th स्टैंडर्ड में एक
एथलीट जो 10th में एथलेटिक्स में था वो 11th में आ रहा है तो एथलेटिक्स के लिए कुछ है ही नहीं उधर फॉर एग्जांपल, तो वो 11th में ढूंढेगा कि मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, 12th हो जाएगा, फिर वो सीनियर कॉलेज में आएगा, 2-3 साल के बाद वो हताश होके इधर जेप्टो पे डिलीवरी करता होगा या कौन से रिटेल स्टोर में एज अ स्टाफ काम समझ करता गया, होगा। yeah. बट अगर वो अंबेडकर कॉलेज में उससे दिखे एक बड़ा पोस्टर हाँ, कि become an athletics coach by scanning this QR code and joining this program, he बिल्कुल। will say कि यार यही तो मेरी पैशन है, ये मुझे करना है, यू नो। सो ये चैनलिंग जो है ना वो हमें करना है कि चैनल द अमेजिंग अमाउंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल इन इंडिया। माई जॉब इज जस्ट टू डू दैट, it's nothing else कि get a tech platform, put all the right stuff there and channel all the youngsters across the country for that. सर ऐसा लग रहा है आपसे बात करके कि मैं दो अलग इंसान से मिला हूँ पिछले आधे पौने घंटे में। एक जो क्रिकेट का दीवाना, एक जो मुंबई क्रिकेट का खिलाड़ी, इंडिया के लिए खेला हुआ, वेरी स्पोर्ट्स पर्सन लाइक, एंड दूसरा एक जिसका बिजनेस एक्यूमेंट इतना हाई है। क्योंकि सर आप यहाँ पे एक लिटरली मास्टर क्लास दे गए हो, जितना मैं आपसे बैठकर चर्चा कर चुका हूँ, जो लोग हमारे देख रहे हैं, इट्स यू नो बहुत लाइफ ऑल्टरिंग चीज़ें हैं ये सब। तो सर अभी आपका आगे, आपने कहा कि यू वांट टू गिव मोर वर्क, यू नो डू ऑल दिस, ये वो, इन 5-7 years डू यू थिंक दिस विल हैपन? आपको प्रोजेक्शन है, क्योंकि आपने 5 साल पहले जो बोला था आज आपने वो कर दिया। 1000% it will happen. 1000%. Our target as Khelomore is that 1 crore Indians should play through Khelomore on a weekly basis. 1 crore 1 Indians. crore Indians should play on a weekly basis. Either somebody has got a coach through Khelomore, or you're playing pickleball or cricket or badminton, or participating in a tournament or joining a community. 1 crore Indians have to play per week through Khelomore, and then we'll see what happens. एक्सेलेंट सर। सर पिकल बॉल की आपने बात की, यू नो आईपा के साथ आपने एक एसोसिएशन किया है जहाँ पर आप यू नो यू आर प्रमोटिंग एंड हेल्पिंग दीज यंग टैलेंट्स। आज हमारे आईपा के लड़के जो है वर्ल्ड वाइड अपना नाम कर रहे हैं, लड़के लड़कियाँ ऑल ऑफ देम, एंड चांसेस आर ऑल्सो देयर कि शायद इसे कंसिडर किया जा सकता है एज अ ओलंपिक स्पोर्ट इज वेल। तो क्या आपको ये भी लग रहा है कि दिस काइंड ऑफ हेल्प एंड इन्वेस्टमेंट दैट यू आर डूइंग टुवर्ड्स अ पिकल बॉल स्पोर्ट, जो सबसे हाईएस्ट ग्रोइंग स्पोर्ट है आज के टाइम, फास्टेस्ट ग्रोइंग स्पोर्ट है? Yeah, pickleball will become the second badminton of India. So today, India has about 12 to 15,000 badminton venues. राइट। Pickleball will have 10 to 15,000 pickleball venues. And this partnership is also about helping AIPA certified coaches get more business through Khelomore. So, you know, when you are running a marketplace, na Yash, it's a two-sided, sometimes a three-sided marketplace. जी, So your customers are on all the three sides. बिल्कुल। So I think this partnership will help, from a certification, from certified coaches getting great opportunity through us as well. We are in the business of channelizing human potential with the aid of technology. एब्सोल्युटली अमेजिंग सर। सो नाउ फाइनली मेरे पास एक इंटरेस्टिंग सा एक सेगमेंट है, और उस सेगमेंट पे मैं जाऊंगा। बिफोर आई मूव टू दैट सेगमेंट, मुझे सिर्फ ये जानना है सर, आपने मेंशन किया कोचेस के बारे में, आपने आपके वसंत सर के बारे में Yeah, मेंशन किया, ही yeah. वाज योर फर्स्ट टेक्निकल मेंटोर yes. एंड स्टफ लाइक दैट। सो सर वसंत सर के बारे में एक स्टोरी, एंड उसके साथ साथ सर कोचिंग की क्या वैल्यू है? आपने ये मुझे पहले भी कहा है बहुत कि एज अ कोच इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू यू नो नर्चर द प्लेयर्स। आज के टाइम पे मैंने पहले भी ये बहुत जगह पे देखा है कि प्लेयर्स को चेंज करना बहुत पसंद है कोचेस। यहाँ पे गए, यहाँ जमा नहीं, थोड़ा सक्सेस नहीं मिला, चलो उसके बाद जाता हूँ, ऐसा। तो ये लॉयल्टी, कोचिंग क्या है एग्जैक्टली सर? I think कोच एक ऐसा इंसान होता है जो बहुत सेल्फलेस होता है, खुद के बारे में सोचते ही नहीं है। एक $1 million बेबी करके एक बहुत अच्छा क्लिंट ईस्टवुड का directed by Clint Eastwood, he's acting in it. उसमें एक superb scene है that when she is getting up, becoming a famous person, some other coach tries to go and talk to her, poach her, and she says ki don't ever try this again. So I think that relationship between the coach and the student is very important. And for me, Vasant Amladi sir was a fantastic human being. For 2 years he coached me, and he was a supervisor in a textile factory. For 2 years he picked me up from home, took me by taxi from Matunga to Marine Lines, dropped me back again, did it for 2 years with me, never took 1 rupee from my father. So these people are built differently. Their success lies in the success of their students. It's like
like Achrekar sir for Sachin. You know, Achrekar sir was always working with some other player when Sachin was scoring hundreds. Achrekar sir was not giving TV interviews and saying, you know, I made him. He was working on some other player whom he thought was talented. So that is, it's a very sacred piece, you know. And in my family, my mother is a retired professor and my father was a coach. So it was all a teaching kind of, and I think that's rubbed off on me. So even with my Khelo More team, I'm trying to give everybody whatever I know. Because that's what my seniors in Nike did with me. You know, so when you said that, this business thing comes well to you, it's all because I've learned from some super smart people. And like I said, you need to be a sponge all the time. I think sports' time has come in India, and it will just keep growing. And that's why the opportunity for tech-led businesses like Khelo More is massive. It's massive. Not only Khelo More, there'll be 3-4 similar businesses which will become very big businesses. Exactly. And I think that's where our competitive advantage is, because I am somebody from the fraternity. Yeah. You know, I think that's where I always tell our team that Khelo More is a company with soul. You know, because we've come up from there. You know, so we are a company with soul. So let's see how it goes. Absolutely, sir. And finally, one more thing that I thought of just addressing now, sir, you were selector of the Indian team. Yes. आपने अपनी कहते हैं कि इस जर्नी में ये भी एक चीज़ इनके नाम है, तो वो भी एक कह दूँ. सर, एक क्वेश्चन मुझे जानना है कि एज अ सिलेक्टर आप क्या देखते हैं एक प्लेयर में, क्योंकि आपके टाइम पे, क्योंकि बहुत ऐसा होता है सर, प्लेयर्स, पुराने प्लेयर्स जो है ये कहते हैं कि हमारे टाइम में ये होता था, माइंडसेट ये था, आज का बहुत अलग है. आज के व्हाट इज योर रेसिपी टू पिक दैट प्लेयर अप? I think 2 or 3 things. One is fearlessness, fearlessly confident. Oh. Fearlessly confident. So, for example, if you are an attacking player, Yash, and you don't score runs in 3 innings, your 4th inning should not be against your character trying to score runs. Yeah, it should be, you know, flavorful with your character, right? And that's called fearlessness. I think Virat Kohli in the 3rd ODI against Australia, 2 zeros, right? In the first 2 games, came out and played exactly the same way. That's what I call fearless. So fearlessness in your ability is extremely important, and that's what I used to look at from a player's perspective. So that's one. The second is I would look at a player, a batsman for example, if they have got out early in the match, how involved is that person for the next 3 days of the game? I never thought of this. Is he celebrating somebody's success there, or is he sitting with a long face? So that tells me that how, because it's a team game. Absolutely. It's about how well that team gels together, which is going to, you know, produce a result. So is he bringing his entire soul to that team, was always something which I thought of. So these couple of pieces, you need a context, you know. Otherwise, my father would say that selection is about judgment, right? And otherwise, any statistician would be the he would say Anandji Bhai Dosa would be the chairman of the selection committee. He just stats bol do ki Yash ko lo, Jatin ko mat lo, aur ho gaya. But it's not about that. It's about judgment. So I think that's the second thing. The third is that if you've seen a player for last 6-7 months, I would always think ki how much has he improved. Like today, if you ask me, Shubman Gill is the most improved player. You know, he's the most improved player in the last 12 months. So that's what these are the pieces I would look at. With his responsibility as a captain also, हमने देखा and improving as a captain also, it's not easy. Not easy. बिल्कुल. And I think it's a growing field. He will become better. Correct. Much better. Thank you, sir. Now finally, I have a segment that I have created and curated. It's called Dressing Room Diaries. Sure. And we'll just talk about some person that you have to name that you think about when I say this. In your whole career, starting from your local cricket, Dadar Union, CCI, Mumbai, India, everywhere. Okay, who's the funniest teammate जो आपके साथ रहा है आपके हिसाब से? और कोई अगर स्टोरी हो तो? Funniest, I think Vinod Kamli. सब यही बोलते हैं, विनोद दा, ऐसे क्या था उनमें? Is hilarious, absolutely hilarious, and you know, he had a great sense of timing. Actually, great sense of timing,
and we would do the most absurd things. हाँ. But he would make the dressing room so light, you know. So I think Vinod, definitely by a long way, one of the funniest guys I've played with. Yeah. सर मस्करी करने के बाद वो जाके 100 मारते थे, यहाँ मस्ती कर रहे हैं, यहाँ जाके 100. Different batsman. Different batsman. No, Yeah. no qualities compared to. Yeah. Next is the best bowler. आपने आपके करियर में लोकल क्रिकेट से लेके इंटरनेशनल तक आपको ऐसा कौन सा बॉलर लगा है यार बहुत तकलीफ देता है ये तो? I think मैं थोड़ा differently answer करूँगा. One of my favorite bowlers of all time is Abby Kuruvilla. Abby Kuruvilla. Yeah, because he really, Abby, I have the highest respect for him. He ultimate team man, always bowled against the wind all his life. Oh. Because either Salil or Ajit or Paras, they got the win, and this guy never said one word about it. But he's bowled such spells for Bombay now. He's won game single-handedly. Gentle giant, yeah. Absolutely. And master engineer as well. You know, he's an engineer. Oh. Yeah. This is some new news for all of us. Yeah. So next up is, who is the player who you thought had the potential to achieve extraordinary things and वो नहीं हो पाया? I think again Vinod Kambli. He was I'm a big Vinod Kambli fan, but couldn't handle the ball when it was above his waist, you know. But he could have really taken the world by storm. So I think Vinod definitely somebody who then recently also I thought Arman Jafar. I thought Arman Jafar also, he still has time. He's a youngster. But I hope he's listening to this and pulls his socks up because I think terrific player. Prithvi Shaw, I will not say anything about him because his time will come. You take it in writing from me. His time will come, you're saying? 100%. He's now not playing for Mumbai, but 100% his time will come. He's the best young batsman in the world right now. I will say that. I've said it in every interview. His time will come. So, but Arman Jafar, I hope he gets his act together. Lot to offer. जाफर फैमिली Correct. से एंड क्वालिटी तो है ही. एंड फाइनली इनके बिना कोई भी इंटरव्यू अधूरा होता है. हमारे मास्टर ब्लास्टर सचिन पाजी के बारे में, हिज इम्पैक्ट ऑन अ ड्रेसिंग रूम, हाउ वाज ही लाइक, एंड योर एक्सपीरियंस इफ यू हैव समथिंग, कुछ आप जो शेयर कर सके जो शायद हमारे दर्शकों ने देखा ना हो. He is I won't talk about his cricket because but he is the most humble person in the world. Humility to a level which is like, I still don't understand how somebody can be so humble. I'll give you a small story. It was my mother's 80th birthday couple of years back. Okay. And we were at a function, her birthday is on 26th of May, and 19th of May we were at a function and he asked me, Ai kashi hai? So I said, she's fine. And I just mentioned ki, तिचा 80th birthday at 26th ला. मी येतो पण सांगू नको तिला. So from 19th to the 26th, we've not exchanged any messages. 26th afternoon at MIG, the function was at MIG. I get a call at 12:30 saying, "Me khalti hai. When should I come up?" So that's him. He is just a unbelievable. God has engineered him. Like we say, na, what time leke banaya hai isko. So I think his humility never ceases to amaze me, and helpful friend beyond words. चलो, थैंक यू सो मच जतिन सर. आपने सारे आपके लाइफ की बातें कर दी, कुछ इंटरेस्टिंग सी थी जिसमें आपने क्रिकेट की अपनी जर्नी में क्या क्या अचीव किया. यू बिकेम अ सिलेक्टर, यू आर नाउ अ वेरी वेरी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, आई कैन से अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन नाउ, एंड होपफुली इन द नेक्स्ट 5 years I'll again sit with you and again I'll ask you the same question. Correct. Sir. Where are we going next 5 years? So thank you so much. That was Jatin Paranjpe sir, and my name is Yash Pathak. Please follow Krishank Sports and like, share and subscribe. Thank you.